Assalamualaikum. Chemistry class for 8th and 9th from Allied School Secure. Chemistry. Now the definition of chemistry is the branch of science that deals with the proper composition and structure of matter. मीन्स केमिस्ट्री वो तमाम चीज़ों को डील करता है कि मैटर का स्ट्रक्चर और वो किस तरीके से अरेंज हुए हैं, उनके एटम्स, उनकी प्रॉपर कंपोजिशन क्या है, किस तरीके से उनकी अरेंजमेंट हुई है, ये सब हम केमिस्ट्री में डील करते हैं. सो another definition of chemistry is the branch of science that deals with the study of properties, composition and structure of matter along with chemical changes involved in it and principles governing these changes. मैटर में वो तमाम कंपोजिशंस, उनकी अरेंजमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उसका स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ केमिकल चेंजेस मींस फिज़िकल चेंज और अ केमिकल चेंज मींस टेम्पररी है या परमानेंट है, ये तमाम चीज़ों को हम इन्वॉल्व करते हैं केमिस्ट्री के अंदर. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. The importance of chemistry is chemistry enables us to design all sorts of material like drugs to fight a disease, pesticides to protect our health and crops, fertilizers to grow our crops for abundant food, fuels for transportation, fibers to provide comfort, variety in clothes and lots of other things. Chemistry also helps us to understand the nature of our environment and about ourselves. The theories of chemistry help us to understand the material world from tiny atoms to giant galaxies. I think it is easy to understand. That's why I cannot translate it into Urdu. Now, historical development of chemistry. Historical development of chemistry consists of following three periods: the Greek period, the Muslim period, the modern period. जिस तरीके से पीरियड्स, जिस तरीके से लोग, यूनान के लोगों ने पहले इस पर रिसर्च करी, इसको समझा, फिर मुस्लिम साइंटिस्ट आए तो मुस्लिम पीरियड हमने उसको कह दिया. नाउ जो अभी चल रहा है वो मॉडर्न पीरियड है. नाउ द ग्रीक पीरियड. ग्रीक फ़िलासफ़र्स, जो यूनानियों ने, जो ग्रीक फ़िलासफ़र्स ने इस पर काम किया, उनमें से द ग्रीक फ़िलासफ़र्स लाइक प्लेटो 347 to 428 बिफोर सेंचुरी. इधर से इस मतलब इन तमाम ईयर्स में इसने सारा अपना जो मेहनत है वो इस पे करी. अरिस्टोटल 322 to 384 बिफोर सेंचुरी. डेमोक्रिटस 357 to 460 BC contributed a lot to the early development of chemistry. इन तमाम, वैसे भी और भी बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया, उनमें से इसको डिस्क्राइब किया है. नाउ कॉन्सेप्ट किस तरीके से प्रोवाइड किया उसको हम इसमें देखेंगे. दे इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड द केमिकल रिएक्शंस. दे थॉट दैट ऑल मैटर वाज derived फ्रॉम 4 एलिमेंट्स. जो केमिकल रिएक्शन जिन चीज़ों की वजह से होते हैं, जो चीज़ें इनमें इन्वॉल्व होती हैं, वो 4 एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये हमारे पास ये तमाम चीज़ें इस तरीके से चेंजिंग होती रहती हैं. वो उनमें मैटर में जो चेंजिंग आती है वो इन चीज़ों की वजह से आती हैं. सो द फर्स्ट इज अर्थ वॉज ड्राई एंड कोल्ड. एयर वॉज कोल्ड, वेट एंड हॉट. फायर वॉज हॉट एंड ड्राई. Water was cold, hot and wet. Now Romans. They developed the chemical arts
They improved metallurgical process and introduced the enameling of pottery. उन्होंने केमिकल में आर्ट्स एक डेवलप किया जिसमें मेटलर्जिकल मतलब मींस मेटल्स में जिस तरीके से उन्होंने जो चेंजिंग करी, जो प्रोसेस किया उसको डिस्क्राइब किया, और इनेमेलिंग मींस उस पोइट्री पर उन्होंने जो हार्ड सरफेसेस से कवर किया मेटल्स के और डिफरेंट सब्सटेंसेस के, तो ऑर्नामेंट्स के ज़रिए, तो उसको हम इनेमेलिंग ऑफ पोइट्री कहते हैं. They developed little theoretical knowledge in this regard and their works were all empirical, experimental means उन्होंने तमाम चीज़ें अपनी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें बताई. Memorize the following topics and write on your copy. Stay home, stay safe, take care of yourself. Allah Hafiz. Thank you.